कोई भी ऐसा इवेंट टूर्नामेंट नहीं है जहां उनका गोल्ड मेडल नहीं है? अरे हम तो शुरू से बचपन से उसके पास रहने वाले हैं, हमें तो बहुत खुशी है भैया। कुछ याद आता है नीरज जब यहाँ से गलियों में निकलते थे, ट्रेनिंग के लिए जाते थे? सारा याद आवा, स्टेडियम में जाते थे पानीपत प्रैक्टिस करने के लिए शिवाजी स्टेडियम में, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत मेहनत करते थे। हंसमुख भी है बच्चा, हंसमुख भी है। हाँ। So as you can see, people and friends, family, everybody is just amazed of his performance. I'm joined by his father. पिताजी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका भी सपना था कि नीरज जो है एक शानदार एथलीट बने, साथ ही साथ एक शानदार व्यक्ति भी बने। तो अभी उन इवेंटों के बाद जैसे ही लौटेगा तो बड़ी खुशियों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। So he's busy on phone calls because everybody is calling his family, wishing them all the best, and I'm joined by his uncle. So सर जी, आप कैसे देखते हैं? आपके अब कोई मेमोरी याद आती नीरज की, जब वो छोटे थे, घर से निकलते थे, आपसे जिद करते थे जाना है ट्रेनिंग के लिए? नहीं, शुरू में तो उसने जाने के लिए थोड़ा ये हुआ भाई, बहानेबाजी करता था, लेकिन जब उसको लगा कि भाई जाना ही पड़ेगा, उसके बाद उसने कभी मतलब सोता हुआ भी उठाना नहीं पड़ा। वो सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाता था और अपने आप ट्रेनिंग के लिए निकल जाता था। अच्छा, 2016 के नीरज चोपड़ा में और 2023 के नीरज चोपड़ा में क्या फर्क आपको नजर आता है? कोई फर्क नहीं है, इतना फर्क है पहले से ज्यादा मैच्योर हुआ है, पहले से ज्यादा मेडल जीतने लगा है और पहले से ज्यादा देश के लिए मेडल लाने लगा है। अब सेलिब्रेशन तो मैं देख रहा हूँ, मैं रात से ही यहाँ पर चल रहा है, मिठाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन जो एक यूजुअल सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर नीरज के लिए उनके आने के वक्त, उसकी क्या तैयारी है? और आपकी कोई बात हो पाई नीरज से? अभी बात नहीं हो पाई है, जैसे ही नीरज का आना होगा, उसका आने का प्लान बनेगा, उस हिसाब से अपनी तैयारियां एडजस्ट कर लेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। सो हियर एवरीवन इज expecting and waiting for Neeraj Chopra that he'll come back at his home, and then the real celebration will go on. Right. Nitin there, of course, speaking with the family of Neeraj Chopra that is awaiting his return with bated breath. Though, of course, like Nitin said, celebrations are already underway in Panipat. Nitin, thank you so much for joining us with that live report from Panipat. Now, also speaking of the men's relay team, they also created, in fact, quite the ripple at the World Athletics Championships. The Indian men's relay team created waves by making the final of the World Championships, but they could not cap it off with a podium finish in the final. The team finished 5th as they finished 2 minutes 59 seconds and 92 milliseconds in the finals in Budapest. Mohammad Anas Yahya began with a steady stride, laying the foundation for a thrilling race. However, Amoj Jacob faltered during the turnover and found himself second to last at the conclusion of the second lap. Nevertheless, Mohammad Ajmal showcased his brilliance as he overtook the Dutch competitor, securing third to last position. Rajesh Ramesh put up a laudable performance to take India up to the 5th position. Meanwhile, India's Parul Chaudhary secured a place in the Paris Olympics despite finishing 11th in the final of the 3,000 meters steeplechase event. She also broke the national record with her 9 minute 15 seconds 31 milliseconds run in the final. Rahul Rawat is now joining me live on this. Good morning to you, Rahul. So it wasn't just Neeraj Chopra who shone at the World Athletics Championships. It was also the men's relay team as well as Parul. Well, that's right, Polumi. It was a remarkable and commendable performance from a lot of Indian athletes at the World Athletics Championship. Neeraj Chopra, of course, every time he gets into a competition, everybody knows, in fact, everybody expects nothing less than a gold medal. As far as other Indian athletes are concerned, it's good that, so often what we see is that these athletes, they compete in domestic competitions. They have very good performances. And the moment they reach in these or compete in these global events, what usually happens is their performances come down. Now, what we've seen here is with Parul Chaudhary created a national record
on her way to this 11th position in steeplechase. Then the 4 into 400 meter relay, an Asian record. So quite a remarkable performance. I'm sure a lot of people were hoping for a medal from them also, but it was always going to be a Herculean task for them, because usually what happens is in the heats, in the qualifying rounds, they did really well. But usually, what the kind of leverage that the other teams have, the likes of USA, Jamaica, Botswana, is they don't feel their best runners in the qualifying rounds or say heats. Now, the Indian team competed back to back on 2 consecutive days, two high intensity races, and it may have taken a toll, but still, a fifth place finish for the relay team is quite commendable. Absolutely, it's very commendable, and that of course just shows the growth of our sports persons in the last few years, and how they of course are aspiring almost to, for those podium finishes as well at these tournaments. Rahul, thank you so much for joining us with all of those details. That's a wrap on this bulletin. For all the latest news and updates, though, you can log on to indiatoday.in or also tune in to our website. Those are the details at the moment. Stay tuned. News and updates will continue on the other side. Hello everyone, this is Anita Brito in conversation with the one and only Shyam Kaushal. Hello sir, कैसे हो आप? हेलो नमस्कार जी। अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे अच्छे लाइनअप्स है, जैसे आपने बोला डंकी है, फिर आपके पास जो बंगाली मूवी है वो भी है। ये बंगला बंधु। हाँ जी। प्लीज उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ बात कीजिए, थोड़ा डंकी के बारे में हमें बात कीजिए। इट्स एन ऑल एंड आउट एक्शन फिल्म? नो, इट इज नॉट ए, देयर इज एक्शन इन इट। बट मुझे ये जानना है आपसे, ये पर्सनल क्वेश्चन है, आपको सबसे ज्यादा कौन से एक्टर के साथ काम करके मजा है, मुझे ये बताइए। मैंने अमित जी के साथ काम किया, अमित जी से लेके सभी के साथ जितने भी आगे ना सभी के साथ काम किया, फिर जो साउथ के भी मोस्टली सुपरस्टार्स उनके साथ भी काम किया। पर आज तक भगवान की दुआ से कभी किसी के साथ इशू नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, सबसे प्यार ही मिला है। तो मेरा एक मानना होता है, जैसा मैं आज भी ओपनली बोलता हूँ कि पिछले मैं 43 साल में मेरे को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि अगर कुछ कमियां होंगी तो मेरे में होंगी, कोई बुरा आदमी नहीं है कोई भी ऐसा। जब मैं एक्टर्स मेरे जो छोटे हैं, जैसा रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया, जब भी मिलते पैर छूते हैं, ऐसा बच्चों की तरह। तो आप अगर उनको प्यार देते हो तो आपको सामने से प्यार मिलेगा ही। India this year is the president of the G20, and Prime Minister Modi will be hosting the Big Leaders Summit in early September. How do you see India's presidency? PM Modi has just given Business Today an exhaustive interview, his first on the G20, where he sees the G20 emerge as a catalyst for a new global order. And there's a lot of talk about emerging as a leader of the global south. How do you see India's efforts at trying to be a catalyst in establishing a new global order? It is true that there is a new order, but there are fundamental economic changes going on, and that we do know.
So the economists at the World Economic Forum also definitely are saying that India will become the third largest economy in the world in a couple of years. So you're bypassing Germany and Japan, and it will be then the US, China, the so-called G2. But my prediction, and I coined this for you here today, I think in a decade we will be faced with a G3. Wow, that's interesting. Can we have a round of applause, please? And this is the first time I'm hearing of G3. Yeah, the G3 is the US, China, and India. And that is a new reality. So far, India has not really leveraged its strength in the global geopolitics. India has been a little bit shy about that. I think what Prime Minister Modi is showing now is that India will also play a more important role when it comes to shaping the new order. Once again, India Today wins Best Channel of the Year. Thank you very much, viewers, for making the India Today group the most awarded TV news network at the ENVA Awards 2023. It's my great pleasure to introduce you today to Professor Sumitra Datta. He is the founding dean of Cornell Business School and currently the dean of said business school in Oxford University. That's a special privilege for me since I'm an undergraduate from Oxford University. In one of your interactions, because I spent the evening with you yesterday digitally, I heard that one of the biggest secrets of success in business is being open to serendipity. And one of the things that's been keeping me up at night for the last many months is AI and its potential. So today, the ability to pick your brain, somebody who has done his PhD in AI 30 years ago and has been following the subject since then, I would say is serendipity. So welcome. Thank you. Thank you very much. I'm dropping my son to university in a few days' time, and he's going to be studying history for 4 years. And I'm just wondering, when he comes out of university, is he going to have any skills that are relevant? He will have some skills for sure, but first of all, congratulations on your son joining university. That's always an important step in the life of any young person. But at university, he will learn a lot of knowledge, which some of it will stay for life, some of it will probably change over time. But the most important skill he'll learn is the social side. Networking, making friends, making relationships. In fact, you mentioned that you met your husband at university, so you never know what will happen to your son too. I hope that he's going to get more than a wife from his university. You have talked about the Moore's law of computer processing power and how computer processing power doubles every 18 months. And that there's a tipping point for technology. You also have a very good visual related to Lake Michigan to explain this. I would very much like you to explain to the audience what that means and where you think we are right now in the world. Wonderful. So, when I talk to executives in any country, I always show this visual. If you can have the visual, okay, that'll be coming up behind me now so you can look at it. Let me give the context out here. So we all know we are living in exponential times, and often that is substantiated by saying that, well, technology is increasing exponentially, both in terms of computing power and in terms of data and other similar aspects.
Now, it's very difficult for us as human beings to understand what exponential really means. So it's a set of numbers, and you can think of it exponentially, but it seems big. But what exactly does it mean in terms of trends over time? So this is a small visual. Hopefully you can look at it clearly. And it shows the filling up of a lake in the US, Lake Michigan, whose volume is roughly the capacity of the human brain in computations per second, and it fills in water at Moore's law frequencies. So you begin with 1 fluid ounce, in 18 months it doubles, another 18 months it doubles, and so on. On the top right, you see a time scale out there. And the time scale goes from 1940 to 2025. And what you will notice is that between 1940 and 2010, you don't see any blue. Okay, so the Moore's law is carrying on, doubling for 70 years, you don't see anything. And then, in 2010, suddenly it explodes. And that's where that exponential curve, the hockey stick part of exponential curve kicks in. Now look at reality, what is happening. Moore's law, modern microprocessors started sometime in the 1960s. So in 2023, we are roughly 63 years into the modern microprocessor age. Compare this to the screen, which means what we have seen in the last 5-10 years is nothing compared to what we will see in the next 5 to 10 years. It's going to explode. And one reason why we are seeing all these great applications of AI, whether it's ChatGPT or other kinds of applications, happening right now in the last 5 years, all of this is happening in the last 5 years, is because of the additional computational power, additional data that's available right now. So what will happen in the next 5-10 years, it really remains for us to discover, at the same time be amazed by. So just taking on from there, Professor has explained very nicely what exponential power means and how it's going to explode. You've also said that humans are more linear. They think linearly. And technology is moving exponentially. So we're on two different curves, right? How do we even compete with technology when it starts moving at this rate? I don't know whether you can compete with technology per se, but what you can try and do is help to create better lives for people, help to create better organizations, and help to become more competitive in some sense in whatever you're trying to do, achieve in the organization. I think the challenge of any kind of a digital/AI transformation that we all have to face is essentially combining two things. So what I term is, the first part is building forward. So all of us have a business, all of us have an organization. I'm in education, you are in media, we have probably bankers and other kinds of sectors out here. So you have to apply technology to improve what you're doing things today. That's your building forward, that's what is easier to do, that's what we understand. What is much more harder, at the same time much more exciting, is creating the future. Now what will happen in 5 years' time, 10 years' time? Keep in mind, not in linear world, but exponential world. So things are changing in the next 5 years dramatically. If you look at that and you say, what will happen in 5 years' time? What will happen in 10 years' time? The answer is, we don't know. So don't believe anyone who says they have the answer in 5-10 years' time. But what you can do is you can do selected experiments to try to experiment with ideas, with concepts, with business models and different kinds of situations, and learn from it and work backwards. So you have to, in fact, do experiments and then try to design your organization so that if it shows signs of success, so that you move towards that in some reasonable path. So this duality, the dual challenge of building forwards and creating backwards, is the essential challenge out here. But the creating backwards is very hard because, A, it sometimes means you have to come up with experiments that are disruptive for your current business, that actually go against your current business model. So people will reject it, people will push back against it, people might actually fail in some of the models because not everything will succeed. How do you deal with the culture of failures? Let's assume you take
2-3 great people from your organization and say, well, go and test this idea out. I'll give you 2 years, I'll give you X amount of money. And guess what? Maybe they'll fail because a lot of ideas will fail. How do you actually take that failure and learn from it? But more important, how do you make sure that the people who took the risks are welcome back? So the risk management of failure, acceptance of failure becomes a very important part of the creation of future. And that is something we are not very good at, basically. Right. That's the challenge. So, I mean, I'm going to boil down this experiment to the question that is on most people's minds. Yeah. If you're running a business, you probably want to know, is it going to save me cost? And if you are part of a business, you want to know, am I going to lose my job? So is AI going to cause job losses? It'll certainly call and make transitions in jobs more acute, sometimes more frequent. That'll happen for sure. But let's look at, AI is, of course, is a long journey. And today, AI is just the next phase in the digital transformation that we all are going through and different sectors are going through. So what do I think is going to happen? I always say the 3 axes of impact or change of AI. So one axis is you can actually apply AI in what we're doing today and get all the benefits of cost, quality, time. So take a simple example. In finance or in banking, if you want to get your wealth managed professionally, before you had to have a certain wealth level to be able to afford the time of a professional banker or manager who managed your wealth. Today, all of that is handled by automated algorithms, AI-based systems, and you can do it much more cheaply for people with even a few, much more smaller volumes of wealth. That allows you to do things cheaply, allows you to grow your customer base. So that's all good news. So that's all actually taking things what you're doing today and doing it better, cheaper, faster. That's clearly a very important area. Then there's another very important area which is broadly termed as consumerization. And that really is using technology to make the lives of the consumer, the customer, simpler, easier, hassle-free and friendlier. And the best example of that is how we today interact with Netflix or Amazon or similar systems. We have got used to this ease of use of these systems, and that similar ease of use is something that other sectors are trying to learn, whether it's healthcare, whether it's government services, whether it's banking and so on. So this consumerization, making life simpler for customers, another very easy, let's say, early win that we can focus on. The much more challenging and the much more harder part is the new business model creation, which is really the creating backwards kind of story. How do you create the new business models? How do you test it out? How do you actually prove it out? I think that's where the interesting challenge is. That's where you need a lot of new skills. That's where you need a lot of new experimentations. And I think combining all these 3 things is essentially a challenge. So some of it will help make things better for what we have today. But then if you start looking at things in the future, it might require major changes in both your capabilities, your processes, your skills, and a number of other factors. So that's some of the things that, the big AI companies are saying that, why are you worried about job losses? This is the end of the work week. It's end of monotony, AI will actually increase productivity, increase GDPs. You will have a universal basic income. You can go to work 2 days a week and be in Bahamas the rest of the time or on a beach. This is utopia. Okay, so some of it is true and some of it is not. Keep in mind the bigger context of what is happening in the world and tech. Right now, there's a huge backlash against tech. Okay, so that you have to keep in mind in context. There's a huge backlash in many countries, especially the countries, that dominate tech to some degree, the US and China. There has been a huge backlash from society, from government, and they're trying to basically control the power, the CEO of these tech companies. So the tech companies are doing all they can to ease the hype, to reduce the stress, to reduce the fear, and basically tell people, don't get alarmed,
don't worry, nothing is going to change, or it'll be just making things better and easier for you. And I think that's disingenuous. It's not really correct. I do think that, yes, it'll make things easier, but at the same time, it will, in fact, change things quite dramatically in some sectors. And it is up to us to be able to decide how do you plan for those changes. One of the things that China has done is created this one girlfriend for 600 million men in China. And the only reason why other companies are not doing it because they're worried about the backlash. That's my view. Well, they haven't done it, so we'll go with that. So how do we define this? Because there's a lot of talk by AI and big tech companies about responsible AI. But the way I look at it, it depends on which perspective or which side you're looking at it from, right? One company's responsible AI is another's worst nightmare. So... Yeah, so I think this, it's not just responsible AI, it's responsible use of technology. And that is very important. I think that's where that's where the regulation part comes in. The regulation part is very important because we have to somehow help society use technology in a responsible manner. It's the same reason why, for example, any technology can have positive things and negative things. And we have to, society, be more oriented towards a positive side and be more careful in preventing the negative side. It's the same reason why in the biological gene sequencing technology, which also progressed dramatically, there are some ethical, legal sort of constraints put in terms of don't try to sequence human babies and change CRISPR technology to change the gene sequences of embryos and so on. While that is same technology is being used for farms, for farm animals and farm plants quite widely already. So what I'm saying is that that's an area which is evolving. I think regulations and societal norms are very important. Now, my biggest concern is that in the world of AI, to talk about AI and digital technologies, the world is getting split in two halves, basically, which is the American half and the Chinese half. And the two halves don't really talk. And their ability to talk is decreasing year by year. And so, do we have any hope for a global system? The chances of that is decreasing. I don't want to appear pessimistic, but there is a real concern out here that the two major powerhouses in the world of technology don't want to talk to each other, don't want to agree to common norms and principles and other kinds of guiding sort of regulations. It's a cause of concern. And they could have very different views on personal IP, a personal copyright, because China's view on what is private and what is not, and versus US is quite different, at least what they declare, right? And I'm concerned, how do we protect ourselves? Because anyone could very easily make an AI avatar of you and say whatever it wanted to. And if you complain, they say, oh, well, he has blue eyes, you don't. So, where do you start drawing the line? Like, this is me, my face, my thoughts, my individuality, and you can't use it to make an AI avatar of it. And it becomes particularly important for people who are famous and who've built an IP for themselves. Very important question, a hard question, no easy answers. And today already you're seeing challenges in the case where you can use generative AI to, learn from artist style of paintings and create a similar style painting. Okay? And the question really is that fair use of IP? Today the challenge is that, again, we don't have rules and regulations really to govern this very well. It's all very fluid and very different across geographies. And also what we have is that, in some sense, the technology will evolve to a point at which it'll, on one hand, make it very easy to manipulate these things. On the other hand, hopefully, it'll give us tools to control it also better from our individual point of view, by which I mean, today, largely, we are in a Web 2.0 world. And the Web 3.0 world, which is being built right now, is being created,
the technology stack for the Web 3.0 world is not yet done completely, is not yet rolled out. And the hope is that when the technology stack for the Web 3.0 is done and rolled out and more widely available, individual citizens like you and I, we'll have more control over our own data, we'll have control over who actually accesses it and what permissions we give to it, and if there's any financial transactions, what are the elements of the transaction. So till we don't have that Web 3.0 commercially widely available, and could be 5-10 years from now, in the meantime, we are really at the mercy of the tech companies and to some degree government regulations around it. And that's one reason why you're finding the tech companies collecting as much data as possible. You know, they're not really, often the data being collected is not directly being used right now. But they're collecting it in the hope that maybe sometime in the future they'll find ways to use it. Okay, so right now there's a land grab happening in the domain of citizen behavior, citizen users, you know, whatever is being created. Now, what is very important out here is that at the same time, the tech companies who are the leaders in the space also have to adopt their own internal, let's say, standards, internal ethics in guiding some of their own actions out here. Some of it is happening, and I hope it becomes stronger, but there's a lot more to be done in this area. So I only have a few minutes left, and though this is a business conference, I'm going to take the discussion a little bit philosophical, and I want to ask you two questions, so you're going to have to be a little short because we only have about 2 minutes. One, does this technology allow people to live forever? No one needs to die because you just upload their thoughts, their avatar, onto computers, and you can say, okay, depending on the decisions that they took for their lifetime, what would they decide about this? Warren Buffett, or after he passes away, his decisions could be done to use in investment long after. I mean, and do people then need to put in their will, I want to die, do not resurrect me digitally? Fascinating question. Your answer is as good as mine. Of course, being alive has multiple components. It's not just only the way you think or the way you decide. There's a number of elements of that. Some of those elements can potentially live forever. It's Yeah. true. You have the websites of people and accounts of people who pass away, unfortunately. And there's an interesting question of how much of their life is represented out there, and that will become more and more a question going forward. So another one of the fascinating issues that we have to grapple with. Okay. Another side of life that affects all of us is love, right? Do you think with the amount of data we have, will we algorithmically be able to find our soulmate? And does this actually, AI, give love another chance? You're asking me all the tough questions at the end. I hope it'll allow us to find love not just in terms of the person we choose to love, but also in the terms of things we love to do. Because I really think that AI will allow us more possibilities, will give us more skills, will give us, I might be a terrible musician, but with some AI, maybe I can create, compose better music. So what I'm saying is that it'll help us to do more of the kind of activities we love, and maybe love and find the right people also. But hopefully that is a positive note to end on. It'll help us to become more loving and more loved, and hopefully become better individuals and better human beings. So I think one of the things about AI which I'm grappling with is that once you start matching patterns and connecting dots at that quantum level, actually it makes everything very predictable, at least for a while. And then where's the magic? I mean, love, death, these are all unpredictable things, and that's what gives it the hold that they have on us, and even serendipity, where we began from, right? That's not predictable. So is the best way to beat AI being unpredictable? What I would say is that embrace technology and embrace it in your own way. So all of us are different individuals, and that's the way God made us. And we all love to do different things and love to explore different topic areas. And let's actually embrace AI to make ourselves more special and more individualized, and not become more generic copies of each other.
And that, I think, is something that I hope will help us in the long run. Thank you so much. This has Thank you been very a much. fantastic session. I hope you guys have enjoyed it. Look, you guys may or may not have a job, but you may find your soulmate, you know. So there's a toss up there. Thank you. Thank you. Thank you very much. Traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Once again, India Today wins Best Channel of the Year. Thank you very much, viewers, for making the India Today group the most awarded TV news network at the ENBA Awards 2023. Traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Once again, India Today wins Best Channel of the Year. Thank you very much, viewers, for making the India Today Group the most awarded TV news network at the ENVA Awards 2023. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जमा करो जना करो। LIC हर पल आपके साथ। टाटा पंच CNG, फाइंड योर वाइब। We're going to turn our attention to the men's javelin throw final. I know there'll be a lot of excitement watching Chopra in India. Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. Silver last time round for Chopra. Can he upgrade that? World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification, and that is another great throw from the Indian athlete. No Indian man or woman has taken a gold. This man, Neeraj Chopra, will take a global gold again. Gold will go to India again. Chopra, what a star. Gold, silver and gold in 3 successive seasons. And what a story he is proving to be for athletics in India. Good morning and a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha. These are the headlines we're tracking at the top of this hour. Neeraj Chopra creates history yet again, wins gold medal in the World Championships. This is India's first ever gold medal in the World Championships. High jump, we'll rock and roll between that and the 2 4x4s, but 28 days after new violence, VHP to resume Shobha Yatra today. Haryana Chief Minister denies note to Yatra. Defiant VHP dares Haryana Chief Minister Khattar. BRS versus BJP versus Congress war escalates in Telangana. Home Minister Shah launches blistering attack on KCR. Says countdown to KCR ouster on in Telangana. Illegal cracker factories bleed Bengal. Cracker factory blast kills 7 in Bengal. Blame game erupts. Congress BJP train guns at Mamata government. TMC hits back, claims ISF role in blast. India Today wins big at EMBA Awards 2023. Rajdeep Sardesai and Rahul Kanwal win big. Shivarur, Gaurav Sawant get top honours. Over 105 awards for India Today. Is it? Congratulations.
India's javelin star Neeraj Chopra scripts history yet again. Neeraj Chopra won the gold medal and etched his name in the history books, becoming the first Indian to win a gold at the World Athletics Championships. In his second attempt, he threw the javelin to a distance of 88.17 meters, which proved enough for him to seal a long-awaited gold medal at the World Championships. Even before he marked his run-up for the final throw, the 25-year-old was guaranteed of the big prize. His medal-laden cabinet already comprised of a gold at the Olympics, the Commonwealth Games, the Diamond League, the Asia Games, and Neeraj has now completed it by adding a gold at the World Championships. In Budapest, focusing more on that technique. मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूँ। आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी, पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था, थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को। पर वही है, गोल्ड जीता है तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, आज किशोर कुमार जेना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना पर्सनल बेस्ट किया और डीपी मनु ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट 8 के अंदर सभी आए और अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की, तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप और ज़्यादा कमाल देखोगे। अभी तो अगर साथ वाले कॉम्पिटिटर्स अच्छा करते हैं तो वो तो होता ही है कि हमको पुश करना, लेकिन मैं क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज़्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता ही है कि हाँ, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक में या स्पीड में और फिर प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में भी पूरा हमको पुश करना ही पड़ता है, बार बार हम करना पड़ता है और फिर अंदर थ्रो भी काफ़ी अच्छी थी उस दिन। तो और रिकवरी का टाइम 1 दिन था बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे रिकवर करके हम वापसी करते हैं और फिर फाइनल में उस तरीके से कम्पीट करते हैं। तो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूँ कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है। पर ये है कि हाँ, अडक्टर के साथ वो थोड़ा सा ध्यान में वो भी इतना ही रखना पड़ रहा था और थ्रो की तरफ भी इतना ही फोकस रखना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा उस चीज़ में गड़बड़ होगी। जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, मुझे लगता है कि जो सभी थ्रोअर्स होते हैं खासकर, उनको जब हाथ से थ्रो निकलती है तो पता लग जाता है। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल लूँगा, अगर आप देखोगे डैनियल स्टाल ने थ्रो किया, रैन क्राउजर ने जब थ्रो किया तो उनको ही पता लग गया था। आप किसी को भी देख लो जो इतनी ट्रेनिंग करते हैं थ्रो की, हमको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं कई थ्रोअर्स को, तो वो इतनी ट्रेनिंग कर करके वो फील आ जाती है और कॉम्पिटिशन्स में जब एफर्ट लगता है तो उससे एकदम रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये थ्रो बहुत अच्छी गई है। तो पर वही है कि 88 मीटर थी, मुझे लगा था कि और अच्छी है, पर स्टिल ठीक थी परफॉर्मेंस, तो पता लग जाता है कि हाँ, अच्छी है, बेटर है पहले से। नहीं, बहुत ही बढ़िया था जी, मतलब दोनों फीलिंग बहुत स्पेशल हैं। ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा स्पेशल था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। अगर आप कॉम्पिटिशन्स वाइज बात करें तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का कॉम्पिटिशन हमेशा ओलंपिक से बहुत ज़्यादा टफ रहता है, सभी एथलीट इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हाँ, आज विन भी किया और साथ में अपने 2 एथलीट्स और थे साथ में, तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कैसे हमारा एथलेटिक्स ग्रो कर रहा है। अभी आदिल सर से ही बात कर रहा कि सर हमको अभी और काम करना है, और अभी सर ने भी मोंडो के लिए यहाँ पे बात की है, तो होपफुली फ्यूचर में हमारा वहाँ पे मोंडो ट्रैक होगा जो यहाँ पे होता है और अच्छी परफॉर्मेंस हम निकालेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। वो तो अपने वहाँ पे बना ही देते हैं। आज मैंने कहीं पे देखी, वैसे मैं इतना मोबाइल यूज़ नहीं करता कंपटीशन से पहले, लेकिन एक वैसे ही मैंने खोल के देख लिया, सबसे आगे आया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यूरोपियन एथलीट्स हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत किसी टाइम भी थ्रो इन्होंने बहुत अच्छी फेंकी हुई है। और जेवलिन का ऐसा ही है कि आप किसी टाइम भी, सिर्फ अरशद का ही नहीं, मुझे लगता है कि याकूब इतना अच्छा तगड़ा थ्रोअर है, वेबर है, और भी थ्रोअर्स थे, तो एकदम निकल के आ सकते हैं। तो हमको बहुत लास्ट थ्रो तक हर थ्रोअर के बारे में सोचना होता है।
पर हाँ बिल्कुल अपने वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान होता ही है हमेशा, और ठीक है वो अपने वहाँ के कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जब हम होते हैं तो हमारा फोकस सभी एथलीट्स पे होता है। और अभी अच्छा रहेगा कि एशियन गेम्स भी है और वहाँ पे फिर से हम कम्पीट करेंगे। खुद से तो ये बात मैं बोलूँगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेवलिन में बात करें तो। Speaking to India today, Neeraj Chopra's proud father heaped praise after the golden boy of Indian athletics won the men's javelin throw at the World Athletics Championships in Budapest. Listen in. हमारे साथ नीरज के पिताजी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। पिताजी, आप लगातार कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि नीरज का जो है गोल्ड मेडल आएगा और वो पूरा हुआ। नहीं, हमें कॉन्फिडेंस था, बस यही है कि अगर थ्रो तक मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई पता नहीं लगता कौन निकल जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था और बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उनको पता था कि भैया देश का नाम ऊंचा करूंगा मैं। यही एक मेडल था जो नीरज के कैबिनेट में नहीं था, वो भी पूरा हो गया। पानीपत के लिए, पूरे इंडिया के लिए इससे बड़ा दिन आपको लगता है जेवलिन के लिए नहीं होगा? जी, हमें तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। News Director of India Today and Aaj Tak, Rahul Kanwal, had a candid chat with Neeraj Chopra after his Olympics gold victory. Listen in. India's javelin champion Neeraj Chopra, welcome to जब भी मैं। नीरज, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप 11-12 साल के थे तो 80 किलो आपका वजन था। जब आप कुर्ता पहनते थे गांव में बच्चे मजाक में आपको सरपंच बोलते थे। तो 11 साल का मोटा सा सरपंच भारत का जेवलिन चैंपियन कैसे बना? गांव में जब थे तो गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध चलता रहता है तो काफ़ी वो खाते थे, वेट काफ़ी बढ़ गया था। तो मोटापे को लेके थोड़ा सा घर वाले बोलते कि फिटनेस के लिए इसको ग्राउंड जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही पानीपत ग्राउंड में गया, शिवाजी स्टेडियम में, और वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग किया, 1-2 महीना फिटनेस किया। तो उसके बाद फिटनेस लेवल ठीक आया तो जेवलिन करते हुए देखा मैंने, जेवलिन ट्राई किया। तो फिर वो बोले कि काफ़ी अच्छा ट्राई है और मतलब अच्छा थ्रो है, तो आप जेवलिन स्टार्ट कर दो हमारे साथ ही। तो तब से पर जेवलिन ही क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। पहले आपने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले तो खास कोई खेलता भी नहीं था जेवलिन, कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद इतना पता नहीं था। बस एक ये था कि जो स्टार्ट किया था वो सच्चे मन से ये था कि हाँ अभी इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है। और जैसे स्टार्टिंग में तो सर बिल्कुल थ्रो भी करना नहीं आता है, 1 साल तक तो कोई डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आराम से करते गए, हार्ड वर्क और अपने ऊपर विश्वास करके। नहीं तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप कबड्डी भी खेलते हैं, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि विराट कोहली या सचिन बनते हैं? ये क्यों सोचा कि जेवलिन का चैंपियन बनना है? जी देखो, हाँ क्रिकेट तो नॉर्मली सभी इंडिया में देखते हैं, कबड्डी और कुश्ती हरियाणा में सभी लगभग ये बोलते हैं मिट्टी से जुड़े हुए खेल, ये तो सभी करते हैं। पर जेवलिन सर मुझे ऐसे कुछ अच्छा लगा, पता नहीं क्यों एकदम, या तो सोच लो कि भगवान को मुझे यही जेवलिन नहीं करवाना था। मैंने ऐसा कोई और गेम ऐसे स्टार्ट नहीं किया, बस नॉर्मली गांव में जैसे खेलते थे तो ठीक है, जैसे वॉलीबॉल भी खेल लेते थे, लेकिन प्रोफेशनली जेवलिन ही स्टार्ट किया मैंने। इतने सारे लोग हैं जो कि इंडिया में जेवलिन की कोशिश कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा के झटके में ऐसा क्या है जी जो आपको चैंपियन बना था? कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद एक टेक्निक सेट हुई और उस पर और ज़्यादा काम किया, तो 7-8 साल में जाके अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तक यहाँ पे गोल्ड जीत सका हूँ। अच्छे से हार्ड वर्क किया, उसी का नतीजा है। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था दुनिया के जेवलिन चैंपियंस के। आपकी एज पे, आपकी 21 साल उम्र है अभी जी, 21 साल की उम्र पे 88 मीटर्स आप फेंकते हो। जो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं या सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, आपकी उम्र पे वो नहीं फेंकते थे। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आदमी
जैवलिन में थोड़ा सा और उसकी उम्र होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और ज़्यादा दूर फेंक सकता है। अगर ऐसा है तो आपको लगता है कि ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में गोल्ड पॉसिबल है नीरज? 2 साल में अभी 86 से मैंने 2 मीटर कवर किया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा और हम हार्ड वर्क करेंगे, टेक्निकल काम करेंगे कोच के साथ मिलके, तो पॉजिटिविटी लग रही है ओलंपिक गोल्ड की। और इस एज में जैसे जिनका जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने इस एज में 88 मीटर तक थ्रो किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे थ्रो रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड पे निशान है आपका, बहुत बढ़िया। मुझे जैवलिन नहीं आता, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं उनको भी जैवलिन के बारे में कुछ आता खास नहीं है। जानना चाहते हैं आपसे, सिखाएंगे आप हमें जैवलिन? जी जरूर। कैसे पकड़ते हैं? ऐसे एक ये ग्रिप है और ये है जो मैं पकड़ता हूँ। फेंकते कैसे? हाथ पूरा पीछे तक खींच कर रख। तो मेरी तो ऐसी गिर गई जी, ऐसे फाउल होता है। मेरा गोल तो गया फिर। मेरा तो फाउल हो रहा है। ये भी फाउल है सर आपका। नीरज ये बताएं कि जैवलिन कितना लंबा होता है, कितना भारी, और इसको पकड़ते कैसे? जी इसकी लंबाई 2.70 मीटर है, ये 800 ग्राम का होता है, और इसकी 3 ग्रिप होती हैं। एक ये वाली ऐसी, हाँ जी, एक ये ग्रिप है और ये है जो मैं पकड़ता हूँ। आप ये क्यों पकड़ते हैं ऐसे? पहले मैंने ये स्टार्ट किया, पर बाद में ये थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगा। मतलब ग्रिप को छूना है बस? ग्रिप को छूना है ताकि हम थ्रो करें तो ये इस पे पूरा फोर्स लग सके। अच्छा, इस पे प्रेशर डालना है। फेंकते कैसे? हाथ पूरा पीछे तक खींच के रखना है। ये हाथ को सीधा करना बहुत जरूरी है। जी, कहीं ऐसे ट्राई करते हैं, पर ये पूरा पीछे यहाँ पे सीधा होना चाहिए ताकि हम थ्रो सही डायरेक्शन में कर सकें। तो फेंक के दिखाइए। तो मेरी तो ऐसी गिर गई, आपकी अंदर गई ऐसे? जी ऐसे फाउल होता है। अगर ये फाउल हो गया, हाँ। मैं डिस्क्वालीफाई। हाँ डिस्क्वालीफाई। तो मेरा गोल तो गया। स्टार्टिंग में मेरे भी ऐसे गिर जाता था कई बार, हाँ। पर आराम से ट्रेनिंग के साथ तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जब तक ये हमारी बातचीत खत्म होगी मेरा भी जैवलिन एकदम सही जाके अंदर जाएगा। नीरज, एक जैवलिन थ्रो के लिए स्प्रिंट कितनी जरूरी है? वहीं से पावर आती है सारी। कई सारे जैवलिन थ्रोअर्स के जो 100 मीटर्स के टाइम है वो तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टाइम है। 100 मीटर थोड़ा है, पर लेकिन 30 मीटर बहुत फास्ट होना चाहिए जैवलिन थ्रोअर, क्योंकि तो आप 30 मीटर कितने में दौड़ते हो? मेरा 3 सेकंड कुछ में आता है। तो स्पीड जितनी अच्छी होगी और हमको जितने अच्छे रिदम में करेंगे उतना अच्छा है जैवलिन। तो जब जैवलिन फेंकता है आदमी तो उसको ऊपर फेंकने की कैसे उसमें? जैसे वर्ल्ड लेवल पे देखिए कई थ्रोअर्स है तो जो बिल्कुल इस पे सीधा करते हैं, सीधा फेंक देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाइट नहीं होती है। और कहीं का है जो थोड़ा रिलीज थोड़ा खराब हो जाता है, जैसे मेरा खराब हो जाता है। एशियन गेम्स में मेरा काफ़ी हाइट था और साइड में भी जा रहा था, फिर भी गोल्ड मिल गया। जी। आप गिर जाते हो, मैं देख रहा था वीडियोस में। बार बार गिरते क्यों आप? वो सर वो पता नहीं क्यों नेचुरली है कुछ, सही पता नहीं, एक जोश आ जाता है उस टाइम पे ज़्यादा या क्या होता है। हाँ, हरियाणा का टशन। पर ये है सर, हाँ, एक जब मैं थ्रो करके ट्रेनिंग में कभी नहीं गिरता हूँ, लेकिन जोश में आके कंपटीशन में गिर जाता हूँ। एक बार आप हमें दिखाएं सीरियसली, अगर आप जैवलिन फेंक रहे हैं तो आप कैसे स्प्रिंट करते हुए आएंगे और फिर आपका मेरा होगा मुकाबला जैवलिन। अब आपने मुझसे जैवलिन फेंकवाना है, फिर आपने मेरे को बताना है कि मेरी टेक्निक गड़बड़ कहाँ पे। मेरा तो फाउल हो रहा है। ये भी फाउल है सर आपका। क्यों हो रहा है फाउल? क्योंकि आप ऐसे फेंक रहे हैं इसको। कैसे? अब आपको सही सिखवाना है मुझे। कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्योंकि सर आप ऐसे ये पकड़ के ऐसे मार रहे हैं। इसको पूरा जैवलिन की जो एक लंबाई है उसी पे एक थ्रो करना है। कैसे? जैसे हमको इसको इसे नीचे दबाना नहीं है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो, इसी डायरेक्शन पे थ्रो करना है। तो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा तो आइडिया हो गया। अब आपका मेरा कंपटीशन। रेडी हो आप? शो डाउन? रेडी, बिल्कुल। तो अभी आपका बेस्ट है 88। जी। सब लोग ये सोच रहे हैं कि 90 कब क्रॉस करेगा नीरज? 90 सर देखो अपना तो 100% दे रहे हैं, देखते हैं कौन से कंपटीशन में। तो 88 के थ्रो में और 90 के थ्रो में क्या फर्क पड़ता है? फिटनेस काफ़ी मायने रखती है और एक अच्छी डायरेक्शन में थ्रो करना बिल्कुल सीधा। तो अभी आपका कितना दूर जाएगा? ज़्यादा नहीं,
50-55 तक। मेरा कितना दूर जाएगा? अगर 35-40 मीटर तक करते तो अच्छा है। लेट्स गो। रेडी नीरज? तो इस बार सही गया नीरज? हाँ सही गया सर। शुक्र है कम से कम थोड़ी इज्जत रह गई। तो मुझे वही टेंशन हो रही थी कि यार तो हरी में फाउल हो रहा है। नहीं, आपने इस बार अच्छा थ्रो किया। लेकिन आपका मेरे से करीब ट्रिपल आगे है। लेकिन कम से कम आपने इतना सिखा दिया कि जैवलिन टेढ़ा ही मेढ़ा सही लेकिन किसी तरीके से अंदर घुस गया। चलो वेल डन। ये शोडाउन आप जीते, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की कैफेटेरिया में है। नीरज, कैसा डाइट मिलता है इंडिया में एथलीट्स को? मैं देख रहा हूँ यहाँ कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन थोड़ा कम। नहीं अच्छा है सर, नेशनल कैंप में अच्छा होता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है मिलता है इंडिया में कि नहीं मिलता? मिलता है सर, अभी तो बढ़ रही है। अभी थोड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी और सभी काम कर रहे हैं। अच्छा एथलीट को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। पहले आप मीट नहीं खाते थे? नहीं, पहले नहीं खाता। 2016 कैसे आपने रियलाइज़ किया कि मीट खाना ज़रूरी है? 2016 में हमारा कैंप गया था पोलैंड। तो यूरोप में ज़्यादातर वेज ही मिलता है, मतलब घास फूस ये ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे वेट लूज हो रहा था और एक जो ट्रेनिंग करते थे हार्ड, उसके बाद जो एक रिकवरी चाहिए डाइट की भी, और तो वो हो नहीं पा रही थी। तो तब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ जयवीर भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा की जैवलिन में शुरुआत करवाई। आप पहले ओरिजिनली जैवलिन फेंका करते थे, नीरज आपको देखने आते थे? नहीं, नीरज फिटनेस के लिए पानीपत आता था वहाँ के लोकल स्टेडियम में। हाँ। ये उस टाइम ओवरवेटेड हुआ करता था काफ़ी। मोटू सरपंच कहते थे तुम? हाँ, काफ़ी मोटा था। क्या देख के ऐसा लगा कि आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल है? फर्स्ट टाइमर के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से फेंक रहा था। इसका बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबल आर्म्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जैवलिन के लिए। हमारे साथ नवल सिंह हैं जो कि कोच रह चुके हैं नीरज के। आपके हिसाब से नीरज की टेक्निक, उनकी फिजिक, उनके तरीके में और बाकियों में क्या फ़र्क? नेचुरल जो इसका जो जर्क है वो इंडिया में किसी के पास नहीं गया। तो विपिन कसाना है या ये है, और इसके अंदर कैपेसिटी है कि ओलंपिक में भी मेडल लेकर आ सकते। मैं कुछ कोचेस का पढ़ रहा था टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, वो कह रहे थे कि नीरज की तो टेक्निक बहुत क्लीन नहीं है। मतलब ये एक नेचुरल टैलेंट है जो कि इनकी थ्रो को ज़्यादा दूर लेके जाता है। टेक्निक के लिहाज से तो अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत उम्मीद है। नीरज की आपने थ्रो देखी होगी, ऊपर जाती है इसकी थ्रो, तो ये कभी भी 90 प्लस 92 93 मीटर कभी भी थ्रो निकल जाएगी, एक्यूरेट एंगल पे हो जाएगा। तो आप क्या बताते हैं? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 98 का है, अभी नीरज 88 पे है। 88 से 98 की दिशा में बढ़ने के लिए आपके हिसाब से और क्या करना है? हर साल के साथ ये एवरेज 2-3 मीटर की थ्रो बढ़ा रहा है और इस साल इसने 86 मीटर के राउंड थ्रो किए हैं। अब काफ़ी इंप्रूव्ड है ये और स्टेबल और मैच्योर थ्रोअर लगता है। एक जो खतरा होता है ना, कैमरा आता है, भीड़ बनती है, जो डिसिप्लिन है या जो फोकस है वो लूज करने का खतरा रहता है? नहीं सर, बिल्कुल। मुझे तो ये चीज़ मतलब कि कैमरा और ज़्यादातर ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अपना ट्रेनिंग और उसी पे फोकस है। अभी मेडल जीत के आए हैं, 2-3 दिन तक थोड़ा सा होगा, उसके बाद फिर अपना वही पुराना काम है जी, ट्रेनिंग उसी लाइन में। नीरज, एक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर अपने फ्री टाइम में क्या करता है? फ्री टाइम में अपना फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग के बाद जैसे जिस टाइम रेस्ट होता है और उस टाइम मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग। मैंने सुना है बाइक चलाने का काफ़ी शौक है आपको? हाँ, पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे, तो जैसे जिस दिन रेस्ट होता था तो ऐसे बाइक उठा के निकल जाते हैं, कभी शिमला की तरफ ऐसे। शिमला की तरफ? हाँ जी। आइए चलिए बाइक राइड पे चलते हैं। नीरज, मुझे ये समझाएं आपके इतने लंबे हेयर स्टाइल का क्या राज है? जब धोनी ने स्टार्ट करा था अपना करियर, वो भी ऐसे ही बाल रखते थे, क्या ये धोनी कट है? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही लंबे रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लंबे रखना। तो ऐसे देख के कॉपी नहीं किया किसी का, पर वैसे अच्छा लगता है। उनको भी काफ़ी सूट करता था, तो सभी उनके बारे में बात करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल आपका काफ़ी क्रेज़ है, यंग बच्चे हैं खासतौर से जो एथलेटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको मोगली मोगली करके कहते हैं। हाँ, मैंने कई बार सुना है, एथलेटिक्स कैंप में भी कई हैं वो मोगली करते रहते हैं। तो शायद हाँ, मोगली का स्टाइल वैसे हो, लंबे रखता है तो साइड पीछे लंबे होते हैं। नहीं, पर मोगली भी नेचुरल एथलीट था। हाँ, सच बता रहे हो, नेचुरल एथलीट था वो, पेड़ों पे चढ़ता रहता था, ये वो एक्टिविटी करता रहता था। अच्छा, मैं ये देख रहा था जब हम लोग स्टेडियम के अंदर थे जी, तो काफ़ी लड़कियाँ आके सेल्फी खिंचा रही थी आपसे। काफ़ी फैन फॉलोइंग है आपकी लड़कियों के बीच में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, लड़के भी आ रहे थे, वो जूनियर एथलीट थे सभी,
और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ मोटिवेट कर सकूँ या फिर ऐसा कुछ, तो बस इसीलिए आ रहे थे सर, ऐसा और कुछ नहीं। पर विजेंदर के बाद ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक इंडियन किसी स्पोर्ट में एथलीट रहा हो, क्रिकेट को छोड़ के, जी, जो कि मॉडल जैसा दिखता हो, जो डैशिंग एकदम मॉडल टाइप का दिखता हो। तो आपके जो मैनेजर्स हैं वो नहीं कहते कि चलिए कुछ अब बॉलीवुड पे या फिर सीरियल्स में कुछ किया जाए? नहीं सर, मेरी जो एक्टिंग स्किल्स है बिल्कुल ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्टिंग वगैरह करना। क्यों लगता है कि एक्टिंग स्किल्स खराब है? पता नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है एक्टिंग वगैरह, और अपना गेम पे ही पूरा फोकस है अभी तो। मैंने सुना है कि आपको हरियाणवी गानों का शौक है। जी बिल्कुल सर, हरियाणवी गाने और रागनी वगैरह सुनते रहते हैं। हरियाणा की एक संस्कृति बताते हैं। रागनी काफ़ी जो गाँव में होती थी पहले, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो रागनियों का भी पसंद किया जाता है हरियाणा में। तो हरियाणा के आपके रूट्स कितने स्ट्रांग हैं? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर जो एथलीट्स निकल के आ रहे हैं हरियाणा से ही निकल के आ रहे हैं? जी पता नहीं क्यों ऐसा कुछ बोलते हैं, मिट्टी में है और खून में वो जिद सी है, पता नहीं क्यों कि। और डाइट भी कुछ ऐसी है हरियाणा की, देसी डाइट है, और एक स्पोर्ट्स का कल्चर है कुछ। शुरू में ही अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स में डाल ले, बोलते हैं वहाँ पे कि आप खेलने जाओ बाहर। प्लस मैं देख रहा था कि फैमिलीज भी इंकरेज करती हैं। जी जैसे बाकी जगहों पे लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हरियाणा में लोग इंकरेज करते हैं। सीनियर एथलीट काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं ना, तो उनको देख के वो जो उनके पेरेंट्स हैं फिर उनको गेम करवाते हैं, इसलिए काफ़ी मतलब दबदबा है हर जगह पे, जैसे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में भी। आपके हिसाब से अगर हमें और नीरज चोपड़ा प्रोड्यूस करने हो तो क्या करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री राठौर सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे खेलो इंडिया राठौर सर ने चलाया है, जिससे जूनियर बच्चों को आगे आने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में और अच्छा मतलब निकल के आएंगे। जेवलिन थ्रो काफ़ी टैलेंट है इंडिया में, जेवलिन थ्रो का है टैलेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि जूनियर बच्चे मैंने काफ़ी देखे हैं जो काफ़ी मतलब अच्छी थ्रो कर सकते हैं। आप जब भी वेट में आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
Once again, India Today wins Best Channel of the Year. Thank you very much, viewers, for making the India Today Group the most awarded TV news network at the ENBA Awards 2023. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the bigger stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the bigger stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Security has been increased in Haryana's New and surrounding areas in view of the Vishwa Hindu Parishad's call for the Shobha Yatra. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has said that the religious procession has not been granted permission, referring to the recent violence in New. Instead, Khattar urged people to visit local temples for Jalabhishek. Even though the police had denied permission for the religious procession, the Hindu outfit VHP has said that they will go ahead with it regardless. 1,900 Haryana police personnel and 24 companies of paramilitary forces have been deployed as precautionary measure. Mobile internet services have also been suspended in New. New district administration has directed all schools, colleges and banks to remain closed today. Remember, 6 people, including 2 home guards and a cleric, were killed in the communal clashes in New and its adjoining areas after a VHP procession was attacked by a mob on July 31st. Let's listen in to this report which my colleague Shreya has filed from New. With the VHP giving a call for the Braj Mandal Yatra, at least 30 companies of paramilitary forces have been deployed in and around New. As you can see around me, that RAF have been deployed in numbers in New to ensure nothing untoward happens. This after the 31st of July incident. We've seen that the VHP has said that the locals can carry out a yatra, but there is no permission that's been given. Only locals individually are allowed to offer prayers, and to ensure that you can see the kind of security deployments. There are drones that are flying. You can see setups that are also kept on the ground for constant monitoring to ensure nothing untoward spirals out of hand.
And this is the kind of setup that you can see that has been deployed by RAF on the ground. While there's a drone that is flying, you can see that there is constant monitoring that's being done by the RAF. At least 30 companies have been deployed in and around Nu to ensure that absolutely no untoward situation spirals out of hand. You can see that this is a mapping that is being done as the drone flies high in the sky. This is RAF on the ground, ensuring that this time there is nothing untoward that happens in Mewat. With video journalist Sanjay, this is Shreya Chatterjee for India Today. So that is, of course, that report that my colleague Shreya has filed from the ground. Listen in to reactions that have been coming in. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने के अभी अपने वो प्रयास भी जारी है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखें। कोई परमिशन नहीं दी गई है हमारी तरफ से, कोई इस बारे में यात्रा के बारे में कोई परमिशन नहीं गई है। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के ज़िलों वाले में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहाँ से भी कोई मूवमेंट का है तो हम डीजीपी साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है। उसके अंतर्गत सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की लीगल टीम ने काशी विश्वनाथ के संबंध में जो मुकदमे चल रहे हैं उनका अध्ययन किया है और हम सबको उस अध्ययन से एक वकील के नाते भी यह विश्वास हुआ है कि हिंदू का पक्ष कानून सम्मत है। हम विजयी होंगे और अंतिम निर्णय के बाद में जहां भगवान थे वहां दोबारा से उनका भव्य मंदिर हम खड़ा कर सकेंगे। शांति और सद्भाव के साथ में सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला है और नूह के लोग यानी मेवात के लोग अभी ये जो G20 की बात हो या माननीय मुख्यमंत्री प्रशासन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया था कि हम नूह के लोग, नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहाँ पर नूह में यात्रा निकालेगा। शेष समाज को हमने कहा है कि अपने अपने घरों के आसपास जो प्रखंड है शिवालय में जलाभिषेक करें। आज 28 तारीख को यानी श्रावण मास के अंतिम सोमवार के तो सुबह 11 बजे सब लोग एक साथ जलाभिषेक करेंगे। मैं वहाँ के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ये यात्रा नहीं है हमारी। पहले मैं क्लियर कर दूं सरकार को, ब्रिज मंडल की धार्मिक यात्रा जब होगी हम उनके साथ हैं। ये तो जलाभिषेक करने जा रहा है हमारा जत्था, इसके लिए हम पूरी तैयारी में हैं और हम बिना किसी हथियार के हम 17 अगस्त को लिख के हरियाणा के गृह मंत्री को, डीजीपी को, एडीजीपी सीआईडी को, तमाम अफसरों को हरियाणा के दे चुके हैं। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परमिशन नहीं है किसी भी तरह की कोई यात्रा की। बड़ी दुखद बात है। हिंदुस्तान में देश का प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता है कि यात्रा नहीं होने देंगे, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन विश्व हिंदू तख्त रुकने वाला नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह गुरुग्राम में और नूह में हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे मेवात में हम दर्शन नहीं कर सकते। मूल विषय यह है कि हमारी धार्मिक यात्रा निर्विघ्न चलते रहना चाहिए। कोई पाकिस्तान में यात्रा थोड़े है, ये हरियाणा में है, ये गुरुग्राम में है, यह और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी यात्रा को छोटा करने का घोषणा उन्होंने किया है, जो आयोजनकर्ता के लोग हैं सभी लोग। तो इसलिए लेकिन व्यवधान तो नहीं होना चाहिए ना, यात्रा बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित यात्रा होना वो न प्रदेश के लिए ठीक है न राष्ट्र के लिए ठीक है। एक बार यात्रा का जो नतीजा निकला है वो पूरे देश ने देखा है। कितने ही लोग हैं जो मारे गए, कितने लोगों के मकान पे बुलडोजर चल गया, कितने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। एक बार फिर वही आंधी हरियाणा के अंदर विश्व हिंदू परिषद चलाना चाहती है और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने यात्रा की इजाज़त ही नहीं मांगी है। वो अपने आप को कानून से ज़्यादा बड़ा समझते हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है उनके इस बयान से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे खड़ी है। नूह में जो हुआ पूरी तरीके से सरकार की विफलता का प्रतीक।
विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि उन एक नेता का बयान आया विश्व हिंदू परिषद का, आपने भी देखा होगा कि हर साल 2 से 3 हजार पुलिस बल लगाई जाती थी इस यात्रा के साथ। इस साल होम गार्ड के सहारे छोड़ दिया गया यात्रा में। तो ये इतनी बड़ी चूक इस साल क्यों हुई? तो या तो ये बहुत बड़ी विफलता है जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लें, या सरकार की नीयत ठीक नहीं। While the mobile internet services continue to be suspended in Nuh district of Haryana since Saturday, the state government has stepped up security arrangements so as to maintain peace and public order in the communally sensitive district. Here's a report. On 31st of July, VHP's Braj Mandal Jalavishek Yatra was cut short because of the riots that started in between the Yatra. Because of that, today the VHP has given a call to resume the Yatra. However, the Haryana police has categorically said that there is no permission for the Yatra and there is Section 144 imposed in the area, bearing locals. No one will be allowed to the Nalhar Shiv Mandir. And this is the kind of preparation that you see on the ground, which is 1.5 kilometers ahead of the mandir. No one, including media personnel, are not allowed near the mandir. Only the locals of Nuh who intend to go and offer their prayers in the Nalhar Shiv Mandir are allowed to go. Their IDs are being checked before they are allowed to go. I'll ask my cameraman to pan you and show the road which leads to the Nalhar Shiv Mandir. This is the stretch that leads to the Nalhar Shiv Mandir. And here, every person who intends to go to the mandir is first asked for an I-card. If the I-card suggests that they are a local, they are allowed to go. If not, no one is allowed to cross this place. Fear grips Haryana's Nuh once again. Hindu outfit Vishwa Hindu Parishad has threatened to resume its Shobha Yatra once again on August 28. Now, despite the administration denying permission for the religious procession, this is expected to happen. At least that's what the VHP is daring. Take a look at this detailed report. Heavy police deployment, drones and barriers. Fear grips Haryana's Nuh once again. This after the Hindu outfit Vishwa Hindu Parishad has threatened to resume its Shobha Yatra once again. It was attack on this yatra that had sparked riots in parts of the state. सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी। Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar sounded a warning to the organizers, saying permission has been denied for the yatra and that only Jal Abhishek is allowed. देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है। अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। Haryana administration is on the toes this time. Schools and colleges have been asked to stay shut on Monday, August 28. Section 144 has been imposed and internet has been snapped once again in Nuh. Meanwhile, the VHP maintains that no permission is required and that they will go ahead with the yatra. इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती। ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। Amid all this, the Vishwa Hindu Parishad has made a startling admission, accepting that licensed weapons were carried during the previous rally, which had come under attack. मैं आपके फोटो से कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। जब उन पर हमले होंगे, गोलियां चलेंगी, लाठी बरसेंगी, पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, वो अपनी कारों में से कुछ लोग निकाल कर लाए होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास लाइसेंस्ड हथियार थे, ये मैं भी मानने को तैयार हूं। Haryana police has summoned Congress MLA Maman Khan in connection with the Nuh violence investigation. Khan is under lens for inciting mob attacks on the VHP Yatra.
New police has now barred visit to Nalhad Shiv temple for the next 2 days. Special passes are being issued for devotees for the Jallabhishek. Paramilitary forces also have been deployed assisting the Haryana cops in maintaining calm this time. Bureau Report, India Today. News coming in right now. First arrest in Bengal cracker factory blast case. Accused Shafiq ran illegal cracker factory. Shafiq ran factory with partner Karamat Ali. Karamat Ali died in the factory blast yesterday. Illegal cracker factories bleed Bengal. Cracker factory blast kills 7 in Bengal, and now the police have arrested the first accused in this case. Rajesh Shah is joining me live this morning. Rajesh, good morning to you. What more can you tell us about this arrest that the Bengal police has made? Well, exactly, Paulami. West Bengal police has made its first arrest in connection with the blast took place yesterday in an alleged illegal firecracker factory in North 24 Pargana district in West Bengal. And West Bengal police also claims that a person who was absconding in this incident, namely Shafiq Ali, has been arrested by the Dattapukur police station last night. And let me tell you, the main owner of this factory, Karamat Ali, and his son has already died during the explosion took place yesterday inside the illegal firecracker factory. And not only 2, a total 7 people have died in this incident. And after this incident took place, this Shafiq Ali, one of the partners who was running this business illegally since last 4 years, he was running away from police. And finally, after tracing his current location and based on the local inputs, the police of Dattapur police station has been able to arrest him last night. And not only Shafiq Ali, one of the partners of this business, also police sources also claims that few more people have been detained by Dattapur police station so far, and they are all being questioned by the local police to reveal about this illegal factory, and more people to be arrested soon. That also came by local police sources. Follow me. Okay, so more arrests could be made in this case. Rajesh, thank you for joining us with all of those details. In Bengal's North 24 Parganas, a massive explosion in an illegal firecracker manufacturing factory has left 9 dead and many injured. Locals allege that police knew about the illegal operation of the firecracker factories, and now a warfare has erupted over the issue. Take a look at our detailed report. Another devastating cracker factory blast. In West Bengal's North 24 Parganas. The massive blast at the alleged illegal cracker factory left at least 7 dead and several injured. The high-intensity explosion on Sunday damaged nearby houses. The bodies of the victims were badly charred. We are given to understand by the locals it is not a sporadic incident. Actually, it revealed many unearthed facts of Bengal's how it is boiling. In this particular area, there are several locations where a factory ran by some locals were ran by locals illegally, particularly for making firecracker. Locals allege that police knew about illegal operation of firecracker factories but took no action. यहाँ थोड़ा बहुत बारूद इकट्ठा करके रखा हुआ था अपने घर में, और वो बाजी बनाकर रेडी करके अपने छत में सुखाने के लिए, और आप देख सकते हैं उधर सूखने के लिए दिया गया, सूखने के लिए ले रहा था, वो सर से गिर गया और ऐसे ही सब ब्लास्ट हो गया। और हर साल ऐसे छोटा मोटा दुर्घटना होता ही रहता है। The BJP launched a scathing attack on the Mamata government for allowing illegal cracker factories to mushroom. Bengal BJP wrote to Home Minister Amit Shah seeking an NIA probe.
TMC, however, claimed role of rival Indian Secular Front run by Muslim cleric Abbas Siddiqui. সে কথাটা শুনুন, এখানে যে এটা হচ্ছে, কেউ যদি মালপত্র নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে কিছু করে তাহলে পরে সেটা তো নিজের দায়িত্বে করছে, সে তো পারমিশন নেয়। বিরোধীরা করতেই পারে, ওনারা তো সবকিছুতেই ওরা চাইবে যে FBI আসুক, CBI আসুক, ওনারা চাইবে তদন্ত করতে। পশ্চিমবাংলার যে পুলিশ প্রশাসন তারা যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। West Bengal Governor CV Ananda Bose said he is taking stock of the situation. Certainly, it has been a ghastly accident. Accidents are not accidental. There will be a human error somewhere. This is being investigated. At this point, I do not want to comment anything more on that. Bengal has seen multiple blasts in illegal cracker factory and is considered a hub of manufacturing crude bombs, which are often used during coal violence. With Ritik Mondal, Bureau Report, India Today. News coming in right now. An FIR has been registered against Telangana Congress leader Kumbam Shivakumar Reddy in Bengaluru on allegations of rape. The FIR was lodged at Cubbon Park police limits based on allegations of rape at a private 5-star hotel in Bengaluru. It is alleged that he brought a girl to the hotel and raped her. Previously, he had faced an FIR registered against him at the Panjagutta police station in Hyderabad. He had also contested in the previous assembly elections but did not succeed. Sagai Raj is now joining me from Bengaluru for more details. Sagai, what more can you tell us about this FIR which has been registered against the Telangana Congress leader? As you briefed that there is an FIR which has been registered against Shivakumar Reddy here in Bengaluru at Cubbon Park police station, and the police are interrogating further on what excuses or on what pretext he has brought the girl to 5-star hotel and raped her. A case has been registered. The investigation is happening as we speak now. Okay. Sagai, thank you so much for joining us with all of those details. So investigation is underway after the case has been registered, as Sagai was informing us. Now, politics heats up in the state of war, Telangana. Union Home Minister Amit Shah, who in fact was in Telangana on Saturday, launched a scathing attack against the BRS, the AIMIM and Congress. He said that the BJP will win this year's assembly polls and topple dynasty-run parties. He said that KCR and Owaisi have joined hands, stating that the BJP won't align with either of them in the upcoming elections. Meanwhile, BRS hit back at Amit Shah, saying he was making baseless remarks as he couldn't stand that BJP was in third place in the state. He, in fact, said that BRS was neither with the NDA or with India Alliance, and they were equidistant from the Congress and the BJP. That's what the BRS is claiming. That's what KCR is claiming. Even Congress slammed Shah, saying BJP was not, in fact, the alternate party in Telangana, but a non-existent party in the state. एक कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। खरगे साहब, इस आयु में क्यों झूठ बोलते हो? आपको भी मालूम है केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं, और मैं बताने आया हूं तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए, ओवैसी और केसीआर के साथ कभी नहीं जाएगी। केसीआर के खिलाफ हम लड़ेंगे। Amit Shah ji came to Khammam and he made some nonsensical statement here because they have absolutely
no development agenda, so they want to try to divert the attention of the people by talking something which is totally irrelevant today, because what the people of Telangana and the people of the country want to know from BJP is what they have done in this last 9 years. Without doing anything to Telangana state, without honoring the bifurcation promises, if Amit Shah ji thinks that people of Telangana will believe their statements and vote for them, they are in misconception. Forget about coming into power, they will be below 5 seats in Telangana. For BRS party, entire Telangana is our family, and we are not 2G or 3G. We are a party and we are a government. We have a leader in the form of Sri KCR who thinks for the generations, coming 100 generations of the Telangana state. That's how the development has been done in the past 9 years. Now, ahead of the big India Alliance meet in Mumbai, there are fresh bouts of unease in the opposition India ranks. After the Delhi showdown with Congress, the Aam Aadmi Party has now gone ahead and ruffled feathers in the ruling Mahagathbandhan camps in Bihar. AAP General Secretary Sandeep Pathak has claimed that his party is readying for a poll fight in Bihar and will not shy away from a political contest. AAP said that it is planning to strengthen the party in every village of the state. AAP's sudden declaration of war in Bihar caught the JDU Congress RJD combine unaware. Both allies, in fact, urged Arvind Kejriwal's party to respect the coalition dharma and iron out differences at the state level. Earlier, Punjab and Delhi units of the Congress were up in arms against the ruling Aam Aadmi Party. The BJP, which often takes on the Ghamandia alliance jibe at the opposition India bloc, used the opportunity, in fact, to mock the opposition ranks once again. Assembly elections will take place in Bihar in 2025. हमने अपनी पार्टी का जो संगठन है वो डिसॉल्व किया हुआ है बहुत पहले से नया बनाने के लिए, तो हम अभी संगठन बना रहे हैं बिहार में, बस संगठन बना रहे हैं जैसे पूरे देश में अलग अलग जगह हर जगह संगठन बना रहे हैं, वैसे बिहार में भी बना रहे हैं। चुनाव तो जब होगा देखा जाएगा, अभी तो संगठन बना रहे हैं। आपकी एक बार जब लोग वॉलेंटियर एक बारी बन जाते हैं तो आपको संगठन बनाते रहना पड़ेगा, संगठन को मजबूत रखना पड़ेगा। तो बिहार जो है वहां पे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है बहुत लंबे समय से, उसमें कोई नया एडेड ऑन कुछ भी फीचर नहीं। नीतीश जी ने कई दफा खुद कह दिया, तेजस्वी जी ने कह दिया अपनी महत्वाकांक्षा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना, प्रधानमंत्री जी को साबुन और शैम्पू का पाउच मत बनाइए। प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र की सामूहिकता का सवाल होता है। आत्ममुग्ध राजनीति से तानाशाह पैदा होता है। व्यक्ति विमर्श ने इस देश का नुकसान कर दिया है। हम सामूहिकता में ले जाएंगे, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो संसद और संस्थाओं के भारी पड़ जाए, जिसके सामने लोग जुबान न खोल पाए। इनका ट्वीट देखिए, इनका बयान देखिए, जैसे ही आरएसएस का बयान आएगा तुरंत इनका बयान आता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों पूरक हैं ही तब आपको तो पहले मोर्चा में आपका जय जय है। देश के अंदर में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों की एकता, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने मुहिम शुरू किया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इंडिया दैट इज भारत, वह इंडिया ही इस देश का सार्थक विकल्प बनेगा और वह तमाम विपक्षी पार्टियों का सार्थक विकल्प बनेगा। Slipping into a very short break, coming up next, 28 days after new violence, VHP to resume Shobha Yatra today. Haryana Chief Minister denies not to Yatra. Defiant VHP dares Haryana Chief Minister Khattar. Details on the other side of this break. India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे
जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत।